All right. We're doing trim A with nutshell volume 2. Let's say the vessel is floating at a draft forward 4 meters and aft 5 meters. And the first point that we know of we talk about is center of rotation. By what is the definition of center of rotation? Anybody in the class? What is the definition of center of rotation? Anybody? Sir, center of flotation can be imagined as a imaginary point for which whole mass of the body is supposed to be concentrated as to be seen flown. Negative. That's not the right definition. Anybody else? How do you define center of rotation? With Captain Rajat Jain, where have you reached in stability? Sir, we have just started Hindship. List is completed. We have just started Hindship. Okay, all right. Sir, the geometric center of the water plane on which the vessel. The geometric center of water plane area is known as the center of rotation. The GC of the water plane area. That's the correct definition of center of rotation. Then the next one. What is LCF? How do you define LCF? Longitudinal center of rotation. Sir, center of flotation से distance को aft. Aft. You have to be very specific now. So the distance between after perpendicular and the center of flotation is known as LCF. Correct. Distance from aft perpendicular to center of rotation is known as LCF. Absolutely correct. How do you define center of buoyancy? It lies on the geometrical center of the ship. Again, not a correct definition. I want a precise definition. I want a precise definition. Come on. Sir, the center of mass of the displaced water. Negative. It is again a geometric center. But of what? That is a question. Underwater volume of ship, sir. Correct. This is the GC of the underwater
It is the geometric center of underwater volume. That is the center of buoyancy. And therefore, consequently, LCB is the distance of the aft perpendicular to the center of buoyancy. And therefore, KB is the distance from the keel. सर LCB तो फॉरवर्ड परपेंडिकुलर नहीं सर, ये LCB वाला समझा दीजिए एक बार. LCB is the longitudinal center of buoyancy, is the distance between the aft perpendicular and the center of buoyancy. Okay, sir. KB is the distance between the keel and the center of buoyancy. What is center of gravity? COG. Concentrated. It is the Concentrated, sir. It is the geometric center of the mass or the weight of the ship. That is center of gravity. And so therefore, what is LCG? Same, sir. Distance from aft perpendicular to COG. Correct. And what is kg? kg is a distance from keel to center of gravity. Correct. Okay, are these basic definitions clear to you? These are the basic definitions. Next, what is hydrostatic draft equal to? The draft at center of rotation is known as hydrostatic draft. Draft at center of rotation is known as hydrostatic draft. सर सेंटर ऑफ फ्लोटेशन मतलब सर वहां तक डूबा हुआ है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन तक. जी, वहां तक डूबा हुआ है. एग्जैक्ट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन तक उसको बोलेंगे सर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट. The draft at the center of rotation is known as hydrostatic draft. ओके सर. You calculate hydrostatic draft. Hydrostatic draft is equal to draft aft minus or plus minus if it is a stern trim plus if it is a head trim is equal to draft aft minus if it is a stern trim plus if it is a head trim into LCF upon LBP. This is the formula for hydrostatic draft. So in this particular scenario, if your forward draft is 4 and aft is 5,
It will be 5 minus, because it's a stern trim. How much is the trim? 1 1 meter. meter into LCF. This will be given to you in the question. LBP given to you in the question. And this will give you your Hydrostatic drop. Any doubt up till now? Any doubt up till now? All clear, sir. Okay. Sir, while calculating hydrostatic draft, Yes, why please. are we always taking draft aft? Why not draft forward, sir? Can take draft forward also, no problem. But this is more convenient. That's why. Because if my forward draft is 4 and aft is 5, is the draft over here will definitely be less than 5. So इसलिए minus. Because I've got a stern trim. If my vessel was down by head, then it would have been 5 plus. Because my draft over here would have been more than 5. Okay, sir. That's why. Answer here, no factor of density. No. Nothing. No factor of density. No factor of density. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Hanji. So hydrostatic draft is calculated in this manner. Now, hydrostatic draft taken in the morning and hydrostatic draft taken in the evening. Difference of the two hydrostatic drafts will give me what? Mean hydrostatic draft, sir. The mean difference of the hydrostatic draft taken in the morning and the hydrostatic draft taken in the evening will give me what is called as the mean rise or mean sinkage of the ship. That means how much is the bodily the ship has gone down or come up. If I'm loading, then I've gone down. If I'm discharging, then I've gone up. Is this okay with everyone? Yes, sir. All right. Sir, this mean hydrostatic draft will depend upon different densities also, no? No, there is nothing. No, I have not written any word called mean hydrostatic draft. I have not written anything like that. There is nothing known as mean hydrostatic draft. So you'll have to be very precise in your statements that you make. It is a difference of the two hydrostatic drafts which give you a mean rise or a mean sinkage. That's all. A mean difference, a difference of the two hydrostatic drafts is what I get. A change of draft at the center of rotation. Okay, sir. This mean sinkage or rise is also equal to W upon TPC. This mean sinkage or rise is equal to W small upon TPC. Small w is a weight which is being loaded, let's say, anywhere on the ship. So this is a weight which is being loaded. It could be anywhere. It could be here, it could be here, it could be kahin pe bhi, aage, piche, daएं, बाएं. TPC is the tons per centimeter immersion. So let's check the units of it. W is in tons. TPC is tons per centimeter immersion. Centimeter goes on top. So this unit on the left hand side will be in centimeters. Is formula number 12 okay with everyone? Yes, sir. All right. Now, so this is all about the bodily sinkage. Now let us come to the trim. That means there is a certain change in trim which is going to happen. So initial trim, difference of the final trim. Will give me TC, change in trim or trim caused.
initial trim, that means the trim in the morning. Difference, final trim in the evening, gives me TC. Change in trim, also called as trim caused. Also called as trim caused. So, in the morning, my trim is 1 meter stern. In the evening, my trim is 2 meters stern. How much is the TC? 1 meter. 1 meter, which side? Astern, sir. Does everybody agree on this? Morning, 1 meter by stern. Evening, 2 meters by stern. TC, 1 meter by stern. Yes, sir. Okay, morning, 1 meter by stern. Evening, even keel. How much is the TC? Sir, 1 meter by head. Correct. The TC is 1 meter by head. Bow is going down. Morning, trim, 1 meter by head. Evening trim, 1 meter by stern. How much is the TC? Sir, 2 meter by stern. 2 meter by stern. ये समझ में नहीं आया सर. Morning में trim 1 meter by stern थी. Initial शाम 1 को meter trim हो गई, final 1 meter हो गई. Initial 1 meter by head. Initial 1 meter by head थी. हाँ सर. Final 1 meter by stern है. Yes sir. So TC कितना है? 2 meter by stern, sir. हाँ जी. Sir, 2 meter by stern. Correct. Is that okay with everyone? No sir. अरे भाई, कितना चेंज ऑफ ट्रिम हो रहा है? 1 मीटर हेड से 1 मीटर, पहले इवन कील गया, फिर 1 मीटर स्टर्न गया. 2 meter सर. तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 2 meter सर. समझ गया सर. और बाव किधर जा रहा है? बाव ऊपर जा रहा है. Yes that sir. means 2 meters by stern. Astern sir. Morning, the trim is 1 meter by head. Evening, the trim is 2 meters by head. Sir, 1 meter by head. By TC. head. Correct. Is that okay with everyone? Yes, sir. Yes sir. Morning, trim is 3 meters by stern. Evening, trim is 1 meter by stern. Sir, 2 meters by head. 2 meter by head. Correct. ठीक है? Is that okay with everyone? Yes, sir. सर लास्ट केस में समझ में नहीं आया सर. Last case में समझ नहीं आया. Morning, 3 meters by stern. Evening, 1 meter by stern. Okay, that is 2 meters sir. 2 meters By by meter what? Head sir. 2 meters by head. Okay. Bow is going down. That's why. Because the bow is going down. Basically, bow को देखना है. Bow नीचे जा रहा है तो head. Bow ऊपर जा रहा है तो stern. Simple. ओके सर. क्योंकि जो आपने फर्स्ट सिनेरियो बताया था ना, जिसमें 1 मीटर और 2 मीटर स्टर्न किया था आपने,
लेकिन उसमें क्या था कि 1 मीटर से 2 मीटर हुआ था, यहाँ पे 3 मीटर से 2 मीटर हुआ है 3 मीटर से लास्ट 1 केस मीटर हुआ, में। हाँ 3 लास्ट मीटर केस से 1, 1 मीटर हुआ है, इसलिए वो हेड बाय हेड आए। करेक्ट. ओके सर, थैंक यू। So now TC, trim cost, is equal to trimming moment upon MCTC. TC, trim cost, is equal to trimming moment upon MCTC. MCTC stands for moment to change trim by 1 centimeter. Trimming moment is W into D upon MCTC. Trimming moment is W into D. So now this W, which is acting down, down. The lever through which this is going to act will be this much. This is your D. Excuse me, sir. Can you please repeat, sir? Your voice was break, sir. This W, which is acting downward, is acting through a lever of D. The D is the lever. E is the center of gravity of the cargo in the hold. G is the center of gravity. So it is the distance between GF. D is the distance between GF. G is the COG of the cargo in the hold. And F is the center of flotation of the ship. I repeat, G is the center of gravity of the cargo in the hold. जिस होल्ड में उस कार्गो को लोड किया गया, उस कार्गो का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द जी. F is the center of. So GF will be the lever through which this W is going to be acting. So this W is going to be acting like this and will cause the vessel to dip down like this. That dipping down is called as a trimming moment. So the force is W into the lever GF. That is the trimming moment. And that divided by the MCTC, moment to change trim by 1 centimeter, will give me what is called as a trim cost or change in trim or total change in trim. Sir, your voice is not coming clear, sir. Is my voice not clear to everyone? Yes, sir. It is coming broke sometimes. सर ब्रेक है सर, बीच में टूट रही है सर आवाज. अभी Okay, I'll जो repeat आपने once again. ये जो आपने समझाया ना टीसी के बाद में, उसके बाद में कुछ सुना ही नहीं आया सर अच्छे से. W is the weight which is acting downward like this. ये समझ में आ गया? हाँ सर. ये जो W है, this is acting through a lever of GF. ये समझ में आ गया? Yes sir. So the trimming moment
is W into GF. Okay, sir. The trimming moment W into GF divided by MCTC will give me TC. Okay, sir. TC is the trim caused or the change in trim जो अभी हम निकाल रहे थे पीछे 13 नंबर में. Okay, sir. So GF is D. This D is GF. GF is D. Okay, sir. GF is D. Is this okay with everyone, the formula? अगर सर ये वेट फॉरवर्ड की जगह पीछे होता तो भी सेम ही सिनेरियो रहता ना सर. सब कुछ सेम रहेगा, कहीं पे भी ये वेट को डाल दो. बट सर अगर इन केस जैसे मिडिल वहां पे रख दिया तो फिर ये जो जीएफ है वो अपने को दिया हुआ होगा सर, ये वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई मीन सर अगर ऐसे अभी तो ये परपेंडिकुलर है. I can't hear you. मेरे को नहीं सुनाई दे रहा. सर जैसे ऐसा बताऊं. ठीक है सर, ठीक है. Let this weight be anywhere. कहीं पीछे भी अगर होगा, the formula will remain the same. Sir, there is one question, sir. If the weight is put on top of the center of rotation, then GF will be 0. Okay, sir. Sir, Then TC will be 0. There will only be a mean rise or a mean sinkage. जैसे सर ये वेट एलसीएफ के पास होता, अभी मान लो जैसे एलसीएफ जैसे आसन में ना एलसीएफ के साइड में एक हो गया सर. हाँ जी. सर मैं बोल रहा हूँ जैसे एलसीएफ के पास में रख देते सर वेट को, जहाँ पे आपने एलसीएफ लिखा हुआ है. अगर मैं वेट को यहाँ पे लोड करता हूँ, नहीं वो तो ऊपर है ना सर, नीचे बोल रहा हूँ. ऊपर हो नीचे हो क्या फर्क पड़ता है? ये तो खाली लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस की बातें हो रही हैं. हाउ डज इट मैटर वेदर इट इज ऑन टॉप और बॉटम? इट डजंट मैटर. कहीं पे भी रख दूंगा मैं. इट इज द लॉन्जिट्यूडनल ट्रिम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ना. लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं, तो हाइट तो डजंट मैटर. Got it, sir. I have one question, sir. या प्लीज गो अहेड. Sir, if the vessel will go down by head, will there be any change in the formula, sir? If the vessel is down by head, the formula remains the same. dA plus head. The sign will become plus. बट सर आपने अभी बताया था सर कि जब सिंकेज हो रहा है तो बाय स्टर्न होता है सर, फिर राइज हो रहा है तो फिर वो बाय हेड होता है. लेकिन अगर वेसल डाउन बाय हेड चला गया सर, तो उस केस में मतलब आफ्ट ड्राफ्ट जो है फॉरवर्ड ड्राफ्ट से कम है सर, तो उस केस में क्या होगा सर? मेरा क्वेश्चन. तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने के लिए यहाँ पे साइन प्लस होगा. इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, चाहे जहाज डाउन बाय हेड हो चाहे डाउन बाय स्टर्न हो, डजंट मैटर. This will remain the same. W, let's check the units. W is in tons. GF is in meter. Meter. Moment to change trim by 1 centimeter. Moment
is TM. To change trim by centimeter. TM cancels. Centimeter goes on top. So unit of TC सेंटीमीटर. will be centimeter. ये समझ में आ गया? यस सर. This is TC. TA, change in trim aft, is equal to TC, change in trim total, divided by LCF, multiplied by LCF, divided by LBP. This will give me change in trim aft. Change in trim aft, TA. This is change in trim aft. Change in trim aft plus change in trim forward will give me TC, total change in trim. Therefore, change in trim forward is equal to total change in trim minus TA. Is this okay with everyone? Hanji, any doubts so far? Whatever we have done. क्लियर सर. Hanji. Any doubt? क्लियर Alright. सर. Okay. What I want you to do is, let's stop here. I want you to go through the chapter in nutshell series, the chapter on longitudinal stability. Please read that. Okay, that's what I've done today from. And after that, the initial bit of trim A. Just, I want you to do example 1. Trim A. Is that okay? So please read Yes, sir. longitudinal stability and do example 1. TC minus TA. TF is equal to TC minus TA. That was the 16th formula that we wrote. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. And now we come to the 17th formula. And that is the summary of the whole thing. That is,
We make a drafts table. We make a drafts table. That is the last and the final. Forward draft, aft draft. So we write down the initial drafts. Let's say our initial draft is 4 meters. Forward, aft is 5 meters. Let's say our initial drafts are these. To this we apply the mean sinkage or the rise. Mean sinkage or the rise. So if I'm going to go sinkage, that means I'm loading. So plus sinkage, plus sinkage. If I'm discharging, minus rise, minus rise. ये समझ में आ गया कि नहीं? Is this okay with everyone? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे. अगर मैं लोडिंग कर रहा हूं तो मैं बॉडीली, मेरा जहाज जो है बॉडीली डाउन जाएगा. अगर बॉडीली जाएगा तो प्लस सिंकेज आगे होगा, प्लस सिंकेज पीछे होगा. और अगर मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूं, कहीं से भी डिस्चार्जिंग करूं, आगे से करूं, पीछे से करूं, कहीं से भी करूं, बॉडीली मेरा जहाज ऊपर जाएगा. माइनस राइज, माइनस राइज. ओके सर. Now we come to change of trim, TF and TA. आगे में TF होगा, पीछे में TA होगा. अगर मैं आगे से डिस्चार्ज कर रहा हूं तो मेरा बाव ऊपर जाएगा, तो TF का साइन क्या होगा? सर माइनस. माइनस. अगर मेरा TF का साइन माइनस होगा तो TA का साइन क्या होगा? प्लस सर. प्लस. अगर मैं आगे लोड कर रहा हूं तो मेरा बाव नीचे जाएगा, तो TF का साइन क्या होगा? प्लस. और TA का साइन? माइनस सर. माइनस. ये मेरे को देगा मेरा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट. ये मेरा ड्राफ्ट टेबल बन गया. इज दिस ओके विद एवरीवन? दिस इज माय 17th फॉर्मूला, द लास्ट फॉर्मूला. सर ये मीन सिंकेज एंड राइज है ना सर? हाँ जी, मीन सिंकेज एंड राइज. यस. दिस इज मीन सिंकेज एंड राइज. दैट मीन्स मैं बॉडीली या तो नीचे जा रहा हूं या बॉडीली ऊपर आ रहा हूं. और TF और TA मेरी चेंज एंड ट्रिम बता रहा है मुझे फॉरवर्ड एंड आफ्ट. ठीक है? इज दैट ओके? So let's start with the questions now. Let's start with the questions. Okay. So exercise number 22. Exercise number 22. I am coming on to the first exercise. The first question. So we are starting off with question number 1. Ship is 100 meters long. So length
100 meters. Her initial drafts: forward 4 meters, aft 5.2. COF is 2 meters above midship. HF 2 meters aft of midship. MCTC is equal to 160. TPC is equal to 15. 100 tons of cargo. W equals 100 tons is shifted from number 3 lower hold to number 1 lower hold. आगे पीछे से आगे जा रहा है. नंबर 3 लोअर होल्ड से शिफ्ट होके नंबर 1 लोअर होल्ड में कार्गो जा रहा है. थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 32 meters. D is equal to 32 meters. Find the new draft forward and aft. So make a scale. This is forward. This is aft. This is midship. H. Center of rotation is 2 meters aft of midship. So center of rotation 2 meters aft. So how much is LCF? This is a 50 meter mark. L by 2. H is the midship mark, 50 meter mark. L by 2. So LCF will be 15 minus 2. 48 meters. Is this okay with everyone? Is LCF okay with everyone? Yes, sir. Okay. Because we are only shifting, there will be no sinkage, no rise. There will only be a trim change. So calculate trimming moment. W into D. 100 into 32. 3200 TM. Because I am shifting from aft to forward, the trimming moment will be by head. Is this okay with everyone? Yes, sir. So trim caused or change in trim is equal to trimming moment upon MCTC. 3200 divided by 160 is equal to TC will be 20 centimeters by head. Therefore, TA is equal to TC into LCF upon LBP. Is equal to 20 into LCF 48 upon 100.
कितना आता है? 9.6. 9.6. So TA is 9.6. Now calculate TF. 10.4, sir. Correct. Write the formula. Put the values. Now go to formula number 17. Drafts table. Write down the initial drafts. No mean sinkage or rise. Put the sign, correct sign for TFTA. Your turning moment is by head. So sign of TF will be what? Sir, Positive. plus. प्लस. और अगर TF का प्लस है तो TA का माइनस. Convert this centimeter to meter. Divide by 100. 0.104. 0.096. So this is your final answer. Any doubts? सर डाउट ये है सर, ये TC और TF, सॉरी T एंड TF, ये कैसे कैलकुलेट किया है सर? ये आपके पास फॉर्मूला है. TC का TC इज ओके. ये सर TC इज फाइन. TC इज फाइन. सो TA का आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है. चेक करो, शायद फॉर्मूला नंबर 15 है. Yes, sir. TA is formula number 15. Right. So TA is equal to TC into LCF upon LBP. तो उसमें उसकी वैल्यूज डाल दो जो आपने ढूंढ के निकाली थी. जो TC की 20, LCF आपने 48 कैलकुलेट किया था शुरू में. LBP हट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में. सर TC का एक्चुअल मतलब क्या होगा सर, कि मेरा कार्गो इतना शिफ्ट हुआ है? नहीं, ये कार्गो जो शिफ्ट किया था मैंने, उससे मेरी जो ट्रिम कॉस्ट हुई है वो 20 सेंटीमीटर की हुई है. जो चेंज इन ट्रिम है मेरी वो 20 सेंटीमीटर है. और उसके रेस्पेक्ट में मैं ट्रिम फॉरवर्ड और ट्रिम आफ्ट निकाल दूंगा. दैट्स राइट. ओके सर, वेल अंडरस्टूड, थैंक यू सर. Any other doubt? Okay. Let's go to question number 3. Let's go to question number 3. सो हर क्वेश्चन में एक ये लाइन स्केल बनाएंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखेंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर 17 यूज होगा. ये स्टैंडर्ड बनेंगे. अब ये हमारा स्टैंडर्ड बनता जाएगा. हर क्वेश्चन में ये होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 17 हर में आएगा. ये लाइन डायग्राम हमेशा आएगा. स्केल. Question number 3. Present draft of a ship 140 meter long. So length 140. Initial drafts 8.1.
TPC is 30. MCTC is 250. HF is 3 meters forward. $300 tons of ballast was pumped out. So W is equal to 300 tons. So discharging हो रही है, pumping out हो रही है. And this was done from number 5 dB tank. जिसकी HG is 50 aft. We have to find the new drafts forward and aft. ये forward है, ये aft है, ये midship है. HF is 3 forward. ये forward है. 3 meters. So LCF कितना हो गया? ये 70 मीटर का मार्क है. L/2. So LCF is how much? 78. 73. Is that okay? LCF is 73. ठीक है, मैंने नंबर 5 डीबी से 300 टन का डिस्चार्ज किया है, जिसका HG ये रहा जी 50 आफ्ट है. यहां से मैं 300 टन को डिस्चार्ज कर रहा हूं. तो अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं तो मेरा जहाज बॉडीली राइज करेगा. तो मीन राइज कितना होगा मेरे जहाज का? तो 300 by TPC. 300 by TPC, बिल्कुल ठीक. सो मेरा जहाज बॉडीली राइज करेगा बाय 10 सेंटीमीटर्स, दोनों जगह से, फॉरवर्ड से भी आफ्ट से भी. अब ट्रिमिंग मोमेंट भी होगा मेरे जहाज का W into D. W is 300 tons. What is the definition of D? That is GF. Distance. That is 50 plus 3. 53. Is this okay with everyone? सर ये 53 बता देना सर एक बार. भाई डी की डेफिनेशन हमने पिछली बार लिखी थी, जरा देखो अपने नोट्स में. यस सर, वाचिंग. शुरू में आई थिंक समवेयर अराउंड फॉर्मूला नंबर 4 or 5. नंबर 4 इज LCB सर. नंबर 4 इज LCB. ओके, तो उसके बाद नंबर 5 इज KB सर. ओके, उसके बाद चलो डी देखो जो कहां पे. 6 is COG, 7 LCG, 8 is KG, Right. 9 is hydrostatic draft, and 10 is hydrostatic draft, आगे चलो. and 11 is hydrostatic draft. Number 12 is mean sinkage oblique mean rise. राइट. 13 Then 13 is initial trim minus final trim, and then 14 is trim cause sir. ओके, अब उसमें देखो ट्रिमिंग मोमेंट. Trimming moment. ट्रिम कॉस्ट में देखो. Trim cause is equal to trimming moment upon MCTC. MCTC is moment to change trim by 1 meter. बाय 1 सेंटीमीटर. Yes sir.
TM ट्रिमिंग मोमेंट क्या लिखा है? W into D, sir. करेक्ट. डी की डेफिनेशन क्या है? Lever is a distance between GF. Correct. Where G is the center of gravity of the cargo in the hold, Yes, sir. and F is the center of flotation of the ship. Okay, sir. So GF will be how much in this case? 50 plus 3. Plus 3, 53, sir. 53. Yes, sir. अगर ये 3 aft होता, then it would have Then been minus 3. Yes, sir. 47. फिर 47 होता. Yes, sir. अब इसको कैलकुलेट करो. This will give you are discharging from aft. So your bow will go down. So trimming moment will be by head. Is this okay? Because you're discharging from aft, आपका bow नीचे जाएगा. Because bow नीचे जाएगा, so trimming moment will be by head. Yes, sir. So that's your trimming moment. So find out the TC now. TC is 63.6. 63.6 centimeters by head. Is this okay with everyone? Yes, sir. So find out TA now. Sir, TA is 33.16 centimeters. सबका सेम आ रहा है. So therefore calculate TF. So TF is equal 30.44 centimeter. Now go into the formula, last formula, formula number 17, and make a draft table and put the values. सर एक डाउट था सर. हाँ जी. सर जो ड्राफ्ट्स निकालेंगे आखिरी में वो हमें कितने डिजिट तक निकालने हैं? Read all MMD standard protocol for every subject. 3 decimal places. Standard protocol. MMD operates on 3 decimal places. Simple. ओके सर, थैंक यू. सर फॉरवर्ड ड्राफ्ट 8.304 एंड आफ्ट ड्राफ्ट 9.469. सबका सेम आ रहा है.
सर एक डाउट है सर। हाँ जी बोलो। सर ये जब हम ट्रिमिंग मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सर इसे बाई हेड और बाई स्टर्न सर कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे क्योंकि अगर मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन के पीछे से डिस्चार्ज किया, यस सर, तो मेरा बाव कैसे मूव करेगा? बाव से डाउन चला जाएगा सर। तो मैं आई एम ट्रिमिंग बाय हेड, यस सर, ट्रिमिंग मोमेंट इज बाय हेड। ओके सर। अगर मैं आगे से डिस्चार्ज करता तो मेरा बाव यस कैसे सर, जाता? बाव से ऊपर चला जाता है, स्टर्न पीछे जाता है, तो अंदर चला। then it would have been by stern. That's all. और अगर क्योंकि ये हेड है तो टीएफ का मेरा साइन जो होगा वो प्लस होगा, और अगर टीएफ का साइन प्लस होगा तो इसका टीए का माइनस होगा। यस सर, दैट्स हाउ यू कोरिलेट। ये तुमने फिर गलत बताया भाई मुझे। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर जो ये मीन प्राइस है आपने दोनों में से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि जब भी मैं डिस्चार्जिंग करूंगा तो मेरा जहाज बॉडीली राइज करेगा और टीएफ और टीए मेरे जहाज को ट्रिम करेगा। तो दो मूवमेंट्स हो रही हैं, एक मैं बॉडीली राइज कर रहा हूं क्योंकि मेरा मीन ड्राफ्ट भी तो कमती होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्चार्ज कर रहा हूं, इसलिए मीन राइज हमेशा माइनस होगा, और अगर मैं लोडिंग कर रहा हूं तो प्लस होगा दोनों में। इज दैट ओके? यस सर। और डाउट? अगर ये डिस्चार्जिंग 300 टन की मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन से करी होती तो क्या फर्क आ जाता? प्राइस होता सर, जो आईसीएफ होता है वो 70 मीटर होता और जो जीएफ की वैल्यू होती है वो 50 होती। फिर से सोचो, अगर मैंने डिस्चार्जिंग 300 टन की सेंटर ऑफ रोटेशन से करी होती सर तो खाली वेसल राइज होता, देयर विल बी नो ट्रिमिंग मूवमेंट। करेक्ट। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्योंकि मैं सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्चार्ज कर रहा हूं तो खाली मैं बॉडीली राइज करूंगा बस, जीएफ तो जीरो हो जाएगा। अगर जीएफ जीरो है तो टीसी भी जीरो है, ट्रिमिंग मोमेंट भी जीरो है, और टीएटीएफ भी जीरो है। ये समझ में आया? यस सर। सो ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खाली बस माइनस यही रहता। दैट मींस इनिशियल ट्रिम जो भी मेरी थी इज इक्वल टू फाइनल ट्रिम, नो चेंज इन ट्रिम। ठीक है? इज दैट ओके? यस सर। यस। ओके। जी, और डाउट पूछो। ओके, टेक क्वेश्चंस फॉर होमवर्क नाउ। प्लीज डू, हमने ऑड नंबर किए हैं, यू डू इवन नंबर क्वेश्चंस। सो दैट मींस यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 and question number 4. All right, please do question number 2 and question number 4. And in solved example, I want you to do solved example 1A, solved example 2A. Do it by the method that we are following. Formula लिख के उस तरीके से करना।
ठीक है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So please do question number 2 and question number 4 from the exercise and solve example 1A and 2A. All right. And then we'll take on next time. Right. Your other topics are all going well. Law has started. Yes, sir. Okay. समझ आ रही है? Yes, sir. सर बट सर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो पर समझ आ रही है सर. ओके. एक बार खत्म करने दो, उसके बाद में अगर कुछ रिवीजन करानी होगी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. I'll get it revised. And sir, Puri sir is saying that he will not do Marpol, so Marpol की classes. ठीक है, मैं वो लगवा देता हूँ. That's okay. I'll do that. मैं करवा दूंगा उसको. मार्पोल भी करवा दूंगा. Okay. And sir, regarding ROR sir, सर मैं पास पेपर चेक करा था तो उसमें रूल 2 एंड रूल 6 भी पूछा हुआ है तो हमने वो डिस्कस नहीं किया था क्लास में. We'll do तो that. अगर We'll do it. Once I finish my stability, then I'll come to rule 2 and rule 6. I'll do that. Thank you sir. Okay. Any other topic which you feel you want sufficient practice or more classes? Any subject you feel? Chart work is going on fine? Yes, sir. यस सर, अभी टाइट चल रहा है सर. उसमें टाइट कंप्लीट होने के बाद में सर देखते हैं जो प्रीवियस टॉपिक्स थे. राइट, बस वो भी हो जाएंगे. ठीक है, डन. ओके ओके. Sir, any schedule sir for exams, the ARI exam?